Would you ever trust a stranger? This is Himalayan guy and also Tarzan. He is Lalit Thakur, aka the Himalayan guy, aka the Summit Seekers. I found him through Instagram where reels are more real than reality. Hello guys. One day, me and Vishma decided to take a break from work and head for this snow trek in Himachal Pradesh. We have done a few hikes before, but this trek was a level up in the group. Anyway, we left for Manali, the first stop of the trip. मैं आपसे ना एक बड़ी अपने दिल की बात बोलता हूँ। देखो अभी मनाली में कोई बर्फ वगैरह नहीं गिर रही है, पर मैं आपको अपनी एक बात बोलता हूँ दिल से। जैसे ही हम मनाली पहुँचेंगे, आपने देखना क्या है कि सामने बोनट पे बर्फ आ गई है, ऊपर से ऐसे आसमान से जो है ना आपको जादुई तरंगे आती दिखेंगी, और इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। कैसा है अभी? क्राउड है क्या कुणाल भाई? ओके दो रंग से देखना कौन सा कुछ। ऑलराइट, दिस इज द मड हाउस। Hello lovely people, right now the time is 4:43 and we have made it to Manali finally। और अभी यहाँ पे ड्रिजलिंग हो रही है और मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद यहाँ पे बर्फ़ आ जाएगी। तो आपको बता दूँ कि मैं मनाली में, ओल्ड मनाली के अंदर मड हाउस में रुका हुआ हूँ। So we were staying in this traditional property called Mud House, Old Manali. The Mud House concept is an initiative to keep traditional architecture alive. This particular house is a Katkuni style mud house managed by super talented artist Kunal. आखिरी पढ़ना चाहूँगा कि सवालों के अंधेरे में हम तुमसे कयामत के दिन वकालत करेंगे। सवालों के अंधेरे में हम तुमसे कयामत के दिन वकालत करेंगे। मुद्दा तुम उठाना और गवाह हम बनेंगे। शुक्रिया। The day ended with visiting our favorite cafe and listening to our favorite man Arjun Amuri at the Mount Walkers Cafe. We left the cafe around 11ish. While being a little tipsy, something came to my mind. जैसे ही हम मनाली पहुंचेंगे, आपने देखना क्या है, आसमान से जो है ना आपको जादुई तरंगे आती दिखेंगी। And it finally started snowing. What's up? It's very cold. It's -5 right now, and we're just practicing how to survive in -15. The next morning was nothing less than bliss. Everything had turned white. Manali was finally having a heavy snowfall. The snowfall had turned the town into a winter wonderland. I was literally staring at the falling snow like a kid staring at the toy shop. I don't know what kind of joy I get out of all this. I don't remember what kickstarted this love, but it's there now for a while, and one thing that I'm sure of is that it will last till my legs give away. Vishuma was equally excited to see the entire landscape change from green to white. We spent almost 3 days in Manali. The reason for this long haul was to acclimatize to the bone-chilling cold. After unlimited number of coffees and chats with our group leader, we were finally ready to go for Rani Sui. Snowing for the entire night, and this is what we woke up to. So basically मैं और विषुमा जा रहे हैं एक ट्रैक पे। ये एक विषुमा का बैग है, ये एक मेरा बैग है, बहुत हल्के बैग है, जो कि स्नो ट्रैक है जिसका नाम है रानी सुई लेक ट्रैक। Are you ready for the trek? Yes, I am.
Fully. How excited are you? Very. So it's going to be our first this kind of challenge in the mountains. Plus the snow makes it pretty much interesting. मेरी आँख लग गई. We have to walk down to the main mall road and then we will take a taxi. Or probably just do rest of the kilometers walking. There's so many people coming to say goodbye. And goodbyes are a part of every journey. Bye. चलो कुणाल भाई. चलो मिलते हैं. ऑल द बेस्ट. Thank you. See you bye. Our training for the trek started as soon as we left the mud house. It snowed all night, all the roads were blocked, and we had to walk almost 4-5 kilometers to the bus station to catch the bus. Unfortunately, no bus was running and we had to take a local taxi to reach the assembly point, Patnikul. So right now the time is 10:50 and we have reached this place called Patnikul right now. और हमारी सारी टीम यहीं पे assemble होगी और यहाँ से फिर हम आज बेस कैंप के लिए चढ़ेंगे. After meeting Lalit Bhai and the rest of the team members, me and Vishma decided to eat something before moving on to a totally different world. एक आगे बैठेगा, एक पीछे, एक आगे. आपके बोलने से पहले ही सेटल हो गए हम. The plan was to move up towards this village called Nialag, which was about 17 kilometers from Patnikul. The trek finally started. सबसे पहले ना आप लोग बैग उठाने से पहले गेटर्स पहन लो. I want you to know that this trek is going to be a 3-day trek in complete snow with temperatures as below as minus 20 degrees. We are finally ready to start the trek. ये ट्रैक जो होने वाली है ये हमारी ट्रैक होने वाली है टोटल 3 days की. और इस जगह से ट्रैक शुरू करके हम लोग एक बेस कैंप पे जाएंगे. वहाँ पे हमारा सारा सेटअप होगा. We had to set up a base camp on the day 1, which is today, and attempt the summit on the day 2 and return to the town on the day 3. The aim of the trek was to reach as far as possible in this much snow. We were actually opening the way on this trail. It was around 11:30 am. We started from Nialag village base. बहुत बढ़िया शक्ल लग रही है आपकी इसमें. The plan was to reach 6 kilometers ahead and set up base camp for a night stay. We were 9 people in total, including a crew of 4. The other trekkers were also from the cities like me and Vishma. We were passing through a wonderland. Everything around was so calm and peaceful. After 2 steps, I lost my balance. The glittering sun between the trees and the falling snow was no less than watching a dream with open eyes. Even with all the wet feet in the negative temperature, my soul was happy. अभी तक हम करीब टोटल हाइक का 25% हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं. थोड़ा सा ट्रिकी तो है स्नो पे चढ़ना, बट वीव गॉट अ वेरी एक्सपीरियंस्ड लीडर विद अस. हिज नेम इज ललित ठाकुर. कैसा रहा गौतम तेरा सीन? मेरा सीन बहुत बढ़िया रहा. Most of these moments for me are very special. We have covered almost half way to Rani Sui, halfway to actually the base camp. And it was somewhere then. The only fear I had in mind was how will we survive the night in this cold. Covered in chaos. बहुत अमेजिंग. बहुत मजा आ रहा है. यस. तगड़ा. बहुत तगड़ा. बेस कैंप चढ़ जाएगा मेरे को लग रहा है. तू मैं समिट चढ़ूंगी यार सीधा. I left every thought behind and just walked and walked.
After walking for about 4 hours in the snow, we finally made it to our base camp. Right now the time is 4:30. We are at our base camp for tonight. हमने लगभग कितने घंटे में किया होगा बॉस? 3 घंटे में? 3 से 4 घंटे में हमने कितना किलोमीटर्स कवर किया होगा? एनी आइडिया? तो कितना किलोमीटर आए होंगे हम नीचे से? 5 किलोमीटर बस। ट्रैक बहुत ही शानदार था और हमको बहुत मजा आया। मतलब बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस रहा, पूरा स्नो के बीच में चलते आ रहे हैं। For us, probably the task was over, but our crew continued to arrange things for us. ये हमारे साथ सपोर्ट क्रू में है जो वो अभी फिलहाल एक बेस तैयार कर रहे हैं जहाँ पे हमारा कैंप लगाया जाएगा। तो आज की रात हमारी यहीं बीतने वाली है दोस्तों। अपने गेटर्स की हालत दिखाते हैं, शूज़ की ये देखिए, सब कुछ गड़ा हुआ है। ये हमारा आज का बेस कैंप गाइस। और रात में एक्सपेक्टेड जो है यहाँ पे ठंड वो है -20 के अराउंड। One of the guys from the crew went to fill water from the top of the mountain, while the other one went looking around for wood pieces for fire. ये हमारा किचन है, आज चावल बनेगा। अभी हमारे एक्चुअली टेंट्स लगेंगे, सामान सारा आ चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। Shoes were completely wet, and on top of that the sun had also gone down, so the temperature dropped drastically. It was extremely cold at the base camp. I had never experienced such a cold before. The fire was the only source which kept all of us together that night. अगर आपको लगे कि थोड़े सूख गए हैं तो पीछे कर लेना, चल भी जाते हैं। All of us wanted to sit as close as possible to the fire. The sky on top of us was glowing like a diamond with millions of stars shining. This moment was not less than a dream that I saw one day. तारों से भरा आसमां होगा बर्फ की चादर पे। रास्ते तो राजा महाराजाओं के टाइम में एक रानी थी। तो सुई मीन्स होता है डिलीवरी होना, डिलीवरी राइट है ना। तो वो रानी उस एरिया में जाकर, रानी सुई लेक के अगल बगल, हमें भी पता नहीं है कहाँ पे, लेकिन उस एरिया में जाकर उसकी डिलीवरी हुई। फिर उस एरिया का नाम पड़ा रानी सुई। After finishing dinner, it was time to get ourselves packed in sleeping bags and close our eyes for the night. हेलो गाइस, द टाइम राइट नाउ इज 10:30। हमने खाना वाना खा लिया अच्छे से। दी ओनली प्रॉब्लम हियर इज -15 डिग्रीज। तो ये एक तरीके का एक्सपीरियंस था, बहुत क्रेजी। अभी भी ठंड से कांप रहे हैं। बस मैं स्लीपिंग बैग्स के अंदर जा रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ बिकॉज और लोग सो रहे होंगे यहाँ पे। तो प्लान है कि हम सुबह उठेंगे 7 साढ़े 7 बजे। 8 बजे तक उम्मीद है कि सूरज आ जाएगा और फ्रेश वगैरह होके हम लोग ऊपर समिट के लिए जाएंगे। वी आर हैविंग अ गुड टाइम राइट नाउ। I got up around 7:30 a.m. Actually, to be honest, I couldn't sleep all night. Today we are going to try trekking all the way up to the summit. इसके अंदर बर्फ जम चुकी है दोस्तों। ये हमारे गेटर्स जो जम गए थे। अभी धूप आई है बहुत सही, 8:11 सुबह के। और अब हम इसको अपने टेंट पे डाल देंगे ताकि ये जो स्नो है ये मेल्ट हो जाए और हम इसको दोबारा पहन पाएँ और ऊपर जा पाएँ। Nobody had recently trekked this trail in snow, and we were the first ones to actually move ahead of the base camp. यहाँ से हम रानी सुई लेक की तरफ बढ़ेंगे और देखते हैं कहाँ तक पहुँचे। बिकॉज रास्ता सारा हमको ही खोलना है, बिकॉज सारा बंद है। तो ट्रेल हम लोग खुद ही बनाते हुए जाएंगे बर्फ में और देखेंगे कहाँ तक पहुँच पाएँ। We left for the summit around 9:30 a.m. So guys, finally ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। हमें ऊपर जाना है। As you can see, sky looks totally clear today. जय भोलेनाथ सबके साथ। It was quite a steep incline. Without looking to my right, I kept on walking. ये देखो नीचे कहाँ चल रहा हूँ। So far so good. Track's going great.
Walking on the snow is not as easy as it looks. Slips are the most common. While walking, I was just thinking, why do I do all this? इतना स्नो भी है ना, इतने स्नो में लास्ट ईयर 19 लोगों को लेकर आया था। बेस कैंप से सिर्फ 2 लड़कियां चढ़ी थी। The winter-laden landscapes and trails bring out an entirely different side of the Himalayas, one that sets it apart from all else. With everything submerged under a thick blanket of snow, the valley have a fairy tale-like appearance. I didn't write this rhyme. I copied it from this blogger called Pranav Harish. I struggle a lot with scripting. It is probably the least interesting thing for me in filming, but I am trying to write. Over the years I have understood, if you keep trying, you won't ever fail. And with the same thought, I kept walking. कितनी हाइट पे हैं हम लोग अभी? अभी हम लोग 10,500। 10,500। अब और कितना आगे जा पाएंगे हम यहाँ से? 1000 फीट और चढ़ने की कोशिश करेंगे। I just wanted to reach the top and see how the valley looked from there. हाथ ठंडे हो गए पूरे। We finally made it to our last point at approx 11,000 feet. I was filled with so much of gratitude at that time. I was really happy. The time is 1:30 right now. हम एक व्यू पॉइंट पे आ चुके हैं। ये जो ट्रैक है ये पूरी तरीके से बंद था। जो हमारे ट्रैक लीडर हैं मिस्टर ललित, वो ही इस ट्रैक को खोलते हुए आ रहे हैं। हम और विशुमा ये व्यू पॉइंट पे रुक गए हैं। बाकी ललित भाई और 3 लोग और ऊपर गए हैं। इफ़ यू कैन सी वो टॉप पे उधर से व्यू देखने, और हम लोग अभी यहीं वेट करेंगे उनका। बहुत मज़ा आया भाई, बहुत मज़ा आया, बहुत सीखने को मिला और काफ़ी एडवेंचरस था ये पूरा का पूरा हमारे लिए जो ट्रिप था। So far so good guys. We will be going back and it will be the end of Rani Sui Lake trek. We can't make it to the lake guys because it's closed. We both actually did something which looked unreal and unbelievable before. We were really proud of ourselves to have come this far in top winters. We sat there and ate our breakfast. After spending about an hour there, we started to descend. We took about 2 hours to reach back. It was the birthday of one of our team members, Rishabh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you everyone. We all were having the time of our life under millions of stars. Blue, green, white and black were my most used color palette all through my childhood. Not knowing that these colors will forever leave firm imprints on my life. We are finally back to the main road from where we started the trek. I feel grateful and I feel blessed to do this trek. He is the man who actually made this entire trek possible. It was awesome, man. Superb, superb, bro. I don't have words to describe this trek. No words. Very amazing. No, I do have words. I am a total mountain guy.
I love anything and everything about mountains. It gives me the pleasure of being free, free from negativity, and free from all kinds of not worthy thoughts. I love being around mountains.